जो भी हमें करना है, कुछ नया सोचना है, कुछ नया जज्बा है हमारे अंदर, तभी हम दुनिया से अलग होंगे। बिल्कुल सही बात उन्होंने कही। तो अगर आप, if you can put your innovations, you can put your new thoughts in area of agricultural biology, in the area of agrobiology, it will definitely improve. Yes, किसानों की समस्याएं चल रही हैं इस समय, तो पूरा एग्रीकल्चर का ही सिनेरियो चल रहा है, तो इट इज वन ऑफ द वेरी important session. So by the core of my lecture, as all of us are knowing that agriculture sector is playing a very, very important role in GDP, in overall growth and power. So manufacturing and services in supply and chain, everywhere agriculture is needing. There is a need to apply new technologies to implement new innovations in the area of agriculture sectors. So bioinformatics is one of them. Yes, bioinformatics is not only confined with the drug designing. Most of the people thought drug designing, database development, these two gives the bioinformatics. No, you can put the bioinformatics approaches in any of the discipline. And agriculture is one of the very, very important. I will be covering all the things later on. So yes, by the definition, bioinformatics is a rapidly developing branch of biology, and it is interdisciplinary branch using techniques and concept from informatics, statistics, mathematics, chemistry, biochemistry. This is the branch where people from the diversity are involved. Even the community bioinformatics also involve the social people. Okay. As he said, Dr. In previous lecture, Dr. Srivastava said that उन्होंने ऐसा assume किया था कि हम कल्पना करें और speaker हमारे सामने प्रकट हो जाए. Exactly. That is the role, that is the beauty of digitalization. That is the beauty of current time. We are connected even in this pandemic situation. So why we can't apply these kind of synergistic effect? Why we can't apply these kind of branches to give the synergistic effect even our agriculture with economy? So it is the branch where people from the different areas are involved, because it contains two kind of people. One is the tool user, another one is the tool maker. Tool user can be of any discipline. It could be biologist, it could be a microbiologist. Tool maker, yes, those who are making these tools, those who are making this softwares, these databases, they might be having some IT skills, some mathematical skills, algorithms and all. So they will be certainly developing a platform. उन्होंने एक मोड तैयार किया, एक जरिया तैयार किया, इस जरिए से चाहे मैं अपनी एग्रीकल्चर के एरिया में काम करूं, चाहे आप मेडिकल साइंस में काम करिए, चाहे आप क्लिनिकल डेटाबेस मैनेजमेंट में काम करिए. सो एक जरिया बनाना है, एक सॉफ्टवेयर, so that is the way how bioinformatics can contribute and is contributing in all area: neuroinformatics, ecoinformatics, agroinformatics, nanoinformatics, even in the area of aquainformatics. So you can apply in any of the discipline your skills. It is the main development of software programs which are designed for extracting meaningful information from the mass of molecular biology, biological databases, agricultural databases for the sequence and structure analysis. ऐसा तो नहीं है कि पौधों के लिए हम दवाएं नहीं बनाते, पौधों के लिए हम पेस्टिसाइड्स नहीं बनाते, या हम खाली इंसानों के लिए ही दवा बनाते हैं. तो आपने सबने बहुत कुछ सुना होगा, डॉकिंग एक बहुत कॉमन प्रोटोकॉल है जो बायोइन्फॉर्मेटिक्स में हर बच्चा ऑलमोस्ट करता है. आपने भी से कुछ कईयों ने किया होगा. आप डॉकिंग का प्रोटोकॉल आप अपनी क्रॉप इंप्रूवमेंट में भी लगा सकते हो, आप पेस्टिसाइड डिजाइनिंग में भी लगा सकते हो. इट डज नॉट, खाली आपको डॉकिंग करना आना चाहिए. So basically, by the definition, agroinformatics is the application of bioinformatics in agriculture sector that have given birth to this branch, which concentrates on the aspect of plant genomics, plant proteomics, transcriptomics, metabolomics, and n number of studies. Okay, of course, plants are the basis of life. They produce so many life supporting systems, including oxygen and all. So for centuries, humans are taking care of plants by either by the worship or by the culture or by this को conserve करके. तो हमने इन सारी चीजों को जब
अपने इस्तेमाल के लिए यूज करना शुरू किया, तो हमारे लिए इंफॉर्मेशन को स्टोर करना भी जरूरी हो गया. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टोर द इंफॉर्मेशन. जहां से जब सारी चीजें आई, वहां से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मर्ज हुई आपकी एग्रीकल्चरल, या आप कह सकते हो प्लांट के साथ में, या एग्रीकल्चरल इंफॉर्मेटिक्स, एग्रीकल्चरल बायोलॉजी के साथ में. तो रिवॉल्यूशन इन द लाइफ साइंसेस ब्रॉड बाय, अभी आप देखो क्रॉप, IAR, Indian Agricultural Research Institute, ICAR, they are doing a lots of bioinformatics approaches. पूरा सबसे पहले, and you are happy to know that India is the land, India is the country where rice genome, the integrated rice genome, it has the very good contribution. The integrated triticum genome, Indian scientists are doing a lot. तो हम अपनी वैरायटी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे नए नए जीन्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं, स्ट्रेस टॉलरेंस कैपेसिटी डेवलप कर सकते हैं, न्यू हाइब्रिड सिस्टम बना सकते हैं. ये सारी चीजें आपके पास तभी तो होंगी जब आपके पास बड़े बड़े जीनोम्स का एनालाइज करने का मेथड होगा. आपने नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग से प्लांट का डेटा तो ले लिया, प्लांट के जीनोम का डेटा तो आपने ले लिया, पर उस जीनोम के डेटा से जो आपको इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है, वो करने के लिए आपको बायोइन्फॉर्मेटिक्स अप्रोचेस जाननी पड़ेंगी, ताकि आप नए उसके कौन से प्लांट में कौन से स्ट्रेस रेजिस्ट, आपने देखा कितनी नई वैरायटी डेवलप होती है, कितने शुगर केन्स की अच्छी वैरायटी बनने लगी, कितने हाइब्रिड. तो until unless you will be not having the sequence data, you will be not having the plethora of data, and आपको डेटा माइनिंग नहीं आएगी, डेटा माइनिंग करके आप नई इंफॉर्मेशन को नहीं निकालोगे, तब तक आप कैसे नई वैरायटीज, नए, लैंड की कमी हो रही है, लैंड की कमी हो रही है. इस कम लैंड में हमको और फर्टाइल और अच्छी क्रॉप वैरायटीज डेवलप करनी है. तो इन दिस वे यू कैन यूज दिस काइंड ऑफ ब्रांच, दिस साइंस बायोइन्फॉर्मेटिक्स, जहां पे आपको जीन लेवल पर, प्रोटीन लेवल पर, हर लेवल पर इंफॉर्मेशन एप्लीकेबल होगी. सो द ग्रेटेस्ट चैलेंज फेसिंग द कम्युनिटी, एक चीज ऐसे समझो, बायोइन्फॉर्मेटिक्स कुछ ऐसा है, आपके पास डेटा है, बहुत डेटा है, जो प्लांट के ऊपर जीनोम कर रहा है, वो आपको डेटा सबमिट कर रहा है जीनोमिक डेटाबेसेस में, प्रोटियोम के ऊपर कर रहा है प्रोटियोमिक डेटाबेसेस में. अब आप एक इनोवेटर की तरह, आप जैसे एक बिल्डिंग ब्लॉक्स नहीं होता है, वी प्ले बिल्डिंग ब्लॉक्स इन अवर चाइल्डहुड. सो बिल्डिंग ब्लॉक्स आर द डेटा, इट इज समथिंग लाइक द डेटा. इस बिल्डिंग ब्लॉक से आप कार भी बना सकते हो, आप घर भी बना सकते हो, आप कुछ भी, you can create, it is your creativity, what you want to design, exactly what kind of information you can filter out, what kind of capacity you can find out by digging out these data, by data information. It is up to your expertise, up to your innovation. जैसे बचपन में हम सब बिल्डिंग ब्लॉक्स खेलते हैं, so it is something like that. Sequence generation and its subsequent storage. Sequence, I think all of you are aware about the sequence, how to get the linear information of DNA, protein, so that we can identify this region is specific in this plant. We can isolate this region, we can clone this gene, and we can further use this information for enhancement of our agricultural aspect. So sequence generation, subsequent storage, interpretation, analysis, entirely in the current time is a computer dependent task. Still in this pandemic, whatever we are doing is a computer dependent, so we cannot get rid of. So however, the molecular biology of organism is a very complex, neither of in the concern of human or in the concern of plant. So with research being carried out at different levels, including genome, proteome, transcriptome, and metabolome levels, can decode the information. You can decode the information, you can read out the information. जब हमने अपने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में प्लांट जीनोम, तो हमने अपनी इंफॉर्मेशन को रीड किया. जब हमने अपनी इंफॉर्मेशन को रीड किया, तो उससे हमने नई इंफॉर्मेशन पता लगाई. फिर उन जो हमारे लिए समस्याएं हैं, उन समस्याओं को कैसे हम रोक सकते हैं, कैसे उनसे हम बच सकते हैं, या कैसे उन समस्याओं को जूझने के लिए हम कैसे नई युक्ति लगा सकते हैं. ये सारी चीजें हमारे पास तभी तो आएंगी जब हम इंफॉर्मेशन हमारे पास होगी. So agroinformatics, what it needs?
It basically needs the explosive growth in agricultural data, storage and management of agriculture. आपने आपने स्टोरेज तो कर लिया, आपने डेटा तो ले लिया. फॉर एग्जाम्पल, आई एम गिविंग यू एग्जाम्पल फॉर एनालॉजी बिकॉज आई एम ए टीचर. आपके घर में मैरिज है, आपने सारा डेटा, आपकी मम्मी ने कहा कि घर में मैरिज है, सारा डेटा आपको स्टोर करना है. आपने क्या किया, एक ही कमरे में सब्जी भी रख दी, दाल भी रख दी, ग्रोसरी भी रख दी, ज्वेलरी भी रख दी, एवरीथिंग यू हैव स्टोर्ड. And you said, yes, Mama, I have stored all the things. We have made the data collection. We have collected. But now your mother asks, give that ring which is required for the ceremony. Oh my God, it is so tough to dig out from that bulk storage. आप उससे निकाल रहे हो कि मैंने कहाँ रिंग रखी थी. So that is the unsystematic manner of storage of data. So of course, storage and management is one of the important things which need agroinformatics. Storage and management. You have stored, yes, we have divided the sector. This is the sector of jewelry, this is the sector of vegetables, this is the sector of, and the very same day you will come, open the drawer, put that thing and give it to your mother. Exactly. When we are trying to search out the things, either gene, protein, any level of information, biological information. So storage and management is very important in all sectors, including agriculture sector also. किस चीज को आप ढूंढ रहे हो. So for this, experts are needed. You can be expert. Then from that storage, transformation of agricultural data. यहाँ पे हमने agricultural इसलिए लिखा क्योंकि I am dealing with the agricultural aspect. Here, transformation, those who are working in the area of Agroinformatics, transformation of the Agroinformatics data. मैंने पहली slide में बोला, bioinformatics is not a rocket science, it is just a systematic protocol. Since last 20 years, I am dealing in the area of bioinformatics. More than 11 of my PhD scholars, they are doing very well. And today, one more is going to be awarded, 12th. So I have applied bioinformatics in different sectors. Lavkush knows me. In agriculture, in drug designing, in neuroinformatics, because it is a systematic protocol. You can develop database of agricultural, you can develop database of any of the damn thing. So it is the transformation of agricultural data, or you can say transformation of data for software development, for your own interpretations. Okay, because it is the predictive biology. You can predict something good, as in meteorology. आज बारिश होगी, जितने अच्छे सॉफ्टवेयर्स हैं उतना अच्छा प्रेडिक्शन है. Exactly in the case of, आप सॉइल को देख के ऐसे छोटे छोटे टूल्स बना सकते हो. बच्चे बना रहे हैं, साइंटिस्ट ने बनाया कि आपने सॉइल का टेक्सचर, सॉइल का कंटेंट आपने डाला, and your software will predict which kind of crop could be suitable for this kind of land. Okay, because धीरे धीरे जो हमारे पुराने किसान हैं, जिनको बहुत नॉलेज है, धीरे धीरे वो खत्म हो रहे हैं. जो भी चीजें हैं, तो हमको अगर अपनी संस्कृति को, अपनी चीजों को जिंदा रखना है, तो हमको टेक्नो सेवर होना पड़ेगा. ठीक है ना. So now you can do one more thing. You can design software, agricultural, you can design agriculturally important biological databases. Many agricultural biological databases are in use. Many of your scientists might be using it. So, of course, biological database is a large organized body of, हमने भी आपको database का concept बताया. It is a systematic arrangement of information. So which are using with the computerized software, designed to update, query, retrieve component. भाई information तभी तो रखते हैं. बैंक में पैसा क्यों रखते हो? जब जरूरत पड़ेगी हम निकाल लेंगे. इसी तरह से जो भी हमारे पास डेटा है, एक बार हमने उसका ऊपर काम कर लिया, सारा उसका जीनोम, सारा उसका प्रोटियोम हमने प्रॉपर्ली स्टोर कर लिया एक सीक्वेंसिंग करा के. तो अब अगर तुमने एक सीक्वेंसिंग या जो भी तुमने अपना काम कराया, उसको कराने के बाद इंफॉर्मेशन आपने निकाली, और अगर उस इंफॉर्मेशन को आपने वेस्ट कर दिया, सो इट इज द वेस्टेज ऑफ टाइम एज वेल एज मनी. That is the beauty of bioinformatics. That is the beauty of database, that on the public domain it can be utilized, reutilised. हर आदमी रिसाइकिल की बात करता है ना, रिसाइकिल हो बायोलॉजिकल वे. तो इस तरह से हम इंफॉर्मेशन को रिसाइकिल कर सकते हैं. आई कैन यूज इंफॉर्मेशन, यू कैन यूज इंफॉर्मेशन, एंड एनी पर्सन हु इज willing can use the information which is publicly available. This is the importance of globalized agroeconomy. Okay. So the simple database might be a single file. I am not going to explain about the databases. It contains many records, entries in the systematic set of information.
So these are the certain agriculturally important biological databases which are freely available online. आपको कोई information लेनी है, आपको gene की लेनी है, crop net की. So these are the different databases with their URL. I will be sharing these slides. I have given these slides to your organizers. If you want, you can browse and you can see the beauty of database designing, how impressive Department of Agricultural, USDA plant database, Geno plant information, GPI database, and these are, this is not the all. I have just compiled some information databases with their URLs and what kind of information they contain. And suppose I am working in the area of tribes, in the area of, then I can use the TKDL is very known project to everybody, traditional digital knowledge library, Government of India. So I can use that database. You are working in the area of agribusiness. You want to support business area up agri MBA karne ke baad, so you can choose the database of your choice. So this is a listing. Yes, publication is also one of the important thing. अगर scientist काम नहीं करेंगे, publications नहीं होंगे, लोगों को कैसे information जाएगी? धीरे-धीरे government ने e-chopars बनाए, centers बनाए, soil testing centers बनाए. All policies are very good and very effectiveness. I'm not going to discuss on this platform, but this is very digitalized. So this all comes under the agricultural informatics. Agricultural informatics does not apply only bioinformatics. Everything comes under the agricultural aspect. Publication, bibliographic, if I want to learn about the integrated genome rice project. So definitely I must have some articles. मैं कुछ इसमें करना चाह रही हूँ. मैं अभी मोरैया कोनेगाई के ऊपर एक एंटी पेस्ट हर्बल डिजाइन किया हम लोगों ने. तो हमने पढ़ा पहले, भाई वी आर, तो हमको पढ़ने के लिए हमारे पास लिटरेचर डेटाबेसेस होने चाहिए. So PubMed is everybody knows PubMed. It is the publication, but there are many biological texts which are especially for the agricultural detail. Like I have just quoted some. PubMed तो सबको पता है, ठीक है ना? So ये हमारे एग्रो इकोनॉमी सर्च इन, आपको एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स में सर्च करना है, आपको बायोमेडिकल माइनिंग में किस तरह से एग्रीकल्चर का यूज हो रहा है. So this is the agricultural field, what Medline is for medical field. हर तरह का लिटरेचर आपको, जिस तरह की इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, you can search with that URL, you can search with that information. So now the databases हो गए, storage हो गया, softwares and programs. These are important tools. Softwares are the program that are designed to carry out analytical steps. If I could get any opportunity to discuss with you in near future, I will take definitely lecture. I have made a very crispy presentation that how students can use which kind of tool in which kind of analysis, because it sometimes become very difficult for the newcomers. I learned bioinformatics by myself because when I did my master's in 1995, no bioinformatics was there. So I have just noted down, categorized down by my own learning. तो आपको क्या काम करना है, उसके लिए कौन सा टूल आप ले सकते हो? आपको अपने प्लांट के प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर देखने हैं तो आप कौन सा टूल देखोगे? आपको प्रोटीन के साथ में किसी पेस्ट का इंटरेक्शन देखना है, किसी पेस्ट के अगेंस्ट आपको उसका पेस्टिसाइड डिजाइन करना है, किसी पेस्ट का और प्लांट के किस प्रोटीन के साथ में उसका इंटरेक्शन हो रहा है, ये स्टडी करना है. आपको प्लांट का पाथवे एनालिसिस करना है. हर चीज के लिए आपके स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, टूल्स हैं. आप ऑप्ट करो, हर एक का मैनुअल है. बायोइन्फॉर्मेटिक्स इज द सेल्फ लर्निंग फील्ड. हर एक का मैनुअल अवेलेबल है, आप पढ़ो, आप उसके साथ में वैसे स्टेप्स करते जाओ, आपका पूरा रिसर्च प्रोटोकॉल up to the conclusion आ जाएगा आपके पास. So there are many software, specialized software program which are designed to carry out analysis steps. So therefore the field of bioinformatics has evolved as the pressing task now involve the analysis and interpretation. आप interpretations करते हो, इसका structure ऐसा हो सकता है, इसके लिए अगर हम ये करें तो you can cut down the steps of wet lab.
आपने 10 स्टेप्स हैं, 10 स्टेप में 9 स्टेप आपने कंप्यूटर पे किया, 10वां स्टेप खाली एक स्टेप आपको वैलिडेशन का रह जाता है. फॉर दैट पर्पस यू कैन यूज योर लेबोरेटरी टेस्टिंग. So you are saving the economy, you are saving the time of yourself. So after storing the proper biological information, softwares are providing to access the information they contain, they design state of art to analyze, visualize, interpret structure, function, hidden clues in data. कौन सा एक्टिव साइट हो सकता है, कौन सा. सो देर आर द सर्टेन टूल्स. आपने कुछ टूल्स हो सकता है पढ़े भी होंगे, कुछ आप काम भी कर रहे होंगे. न्यूक्लियोटाइड अगर हर जैसे हमारे अंदर डीएनए, प्लांट के अंदर भी तो डीएनए है भाई, ऐसा तो नहीं है, ठीक है ना. प्लांट का भी जीनोम है. मॉडल ऑर्गेनिज्म एरोबियोसिस थैलियाना कितना कितना हिट हुआ प्लांट था, ठीक है ना. सो दीज आर द सर्टेन एंड यू विल बी फाइलोजेनेटिक एनालिसिस, जो मॉलिक्यूलर एनालिसिस है आपकी, उसने बहुत सारी चीजें बताई. उसने ये भी बताया कि इवन इन द एरोबियोसिस थैलियाना दैट वाज अ प्लांट बट इट वाज कंटेनिंग द जीन्स व्हिच आर associated with HIV. So that means कि if I'm working, you can identify certain model organisms. आपने अलाइनमेंट करके एक पर्टिकुलर जीन पे काम कर रहे हो, तो आपको अगर वही जीन किसी एनिमल की जगह आपको किसी क्रॉप में मिल जाता है या किसी छोटे प्लांट में मिल जाता है, एल्गी में मिल जाता है, तो आपके लिए उसका मॉडल ऑर्गेनिजम्स की तरह आप उसको स्विच ओवर कर सकते हो. उसके ऊपर आप अपने जीन की एनालिसिस कर सकते हो, प्रोटीन की एनालिसिस कर सकते हो. सो यू कैन आइडेंटिफाई novel model organisms of your research also. So these are the certain nucleotide sequence analysis tools which are used by different agricultural biologists or agricultural scientists in the area of. These are the certain tools which are used. BLAST is a very common tool. Everybody is using. मैंने बोला ना, bioinformatics does not have its boundaries. कि नहीं भाई, हम ही use करेंगे, तुम नहीं use करोगे. That is the importance. I can also use, you can also use, anybody can use, because protein अगर आपको estimate करना है, protein estimation एक protocol है. चाहे लॉरियन ब्रॉन्स्टेड से मैं एनिमल का करूं, आप फिश का करो, आप किसी का भी करो, तो एक सेट ऑफ. तो इसी तरह से बायोइन्फॉर्मेटिक्स में भी एक सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स हैं, जो सेट ऑफ डेटाबेसेस हैं, जो आप किसी भी एरिया में इस्तेमाल कर सकते हैं. आप एग्रीकल्चर में करिए. So open mass spectrometry search algorithms, CDART, CD search, B-link, blah, tax plot, these are the certain specific protein sequence analysis. So yes, as human genome, as plant genome. If you go in the NCBI, there is a proper sector in which genomes of different plants are available. So you can deal with because in the current time, now we have shifted from classical genetics to genomics, now up to the transcriptomics. अब हम एक जीन 4 जीन पे की बात नहीं करते, पूरे जीनोम की बात करते हैं. नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग, हाई थ्रूपुट डेटा ने पूरी आपकी जो एक सोच है उसको बदल दिया कि पूरा जीनोम, अच्छी पाइपलाइंस डिजाइन करके, अच्छे टूल्स. हमने कहा कि हमारे पास पूरा एक जीनोम है, अब हम उसमें देखना चाहते हैं कौन से माइक्रो आरएनए हैं, कौन से स्पेसिफिक वेरिएंट्स हैं, कौन सी चीजें हैं. तो आपको क्या चाहिए, आपको पूरा जीनोम का डेटाबेस चाहिए. आप उसको, वो डेटाबेस, आपको जीनोम की इंफॉर्मेशन चाहिए. वो इंफॉर्मेशन आपके पास कहाँ से आएगी, जब आप उसका नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग कराओगे, हाई थ्रूपुट स्क्रीनिंग, हाई थ्रूपुट डेटा माइनिंग करोगे. उसके लिए आपके प्लेटफॉर्म्स होते हैं, एलुमिना, रोशे 450, नैनोपोर, ये हार्डकोर मशीनें हैं. आपने अपना डेटा दिया, यहाँ पे डेटा आपका पूरा जीनोम एनालाइज हो गया. अब आपके पास पूरा डेटा आ गया, जैसे बताया. इस डेटा से आप अच्छी इंफॉर्मेशन जो आपके लिए है, स्पेसिफिक है, ट्रांसक्रिप्टोमिक इंफॉर्मेशन, एक्सोम की इंफॉर्मेशन, ट्रांसक्रिप्टोम की इंफॉर्मेशन, वेरिएंट्स की इंफॉर्मेशन, आप हर इंफॉर्मेशन को एनालाइज कर सकते हो. दिस इज नोन एज द जीनोम एनालिसिस. और अब मैक्सिमम लोग आपके जीनोम के ऊपर ही शिफ्ट हुए हैं. तो जीनोम एनालिसिस के लिए भी आपकी स्पेसिफिक टूल्स है. जीनोम एनालिसिस के लिए आपके स्पेसिफिक वो हैं, क्या कहते हैं, पाइपलाइंस है. पाइपलाइंस मींस सेट ऑफ सॉफ्टवेयर्स को कैसे हमने सेट किया अपनी एनालिसिस के लिए. सो इट इज द मोस्ट एडवांस एंड डिमांडिंग ब्रांच इन करेंट टाइम. कौन सा पेस्ट,
किसी गन्ने पे हो रही है बीमारी, किसी गन्ने पे नहीं हो रही है, तो क्यों नहीं हो रही है, ऐसा कौन सा जीन है, किसी पे पेस्ट लग रहा है, किसी पे पेस्ट नहीं लग रहा है, कौन से जीनों, अगर तुम दोनों जीनोम को कंपेयर करो तो आपको पता चलेगा ना विच काइंड ऑफ स्पेसिफिक variants, which kind of specific structural variants, which kind of specific genes are present in healthy plant and in disease plant. So you can do the comparison and you can target certain new protein or certain new genes for your further analysis. So these are the certain tools which are involved to decode the expression analysis, gene expression, GEO. GEO is a common database for, you can also submit, I can also submit, I can also use data, not only of the plant, animal, human, every data is available in the GEO, Gene Omnibus. Sage map, this is a specific cancer genome. These are the certain programs, information interest programming utilities, information engineering branches. These are the certain programs, tools हैं जो कि tools of programmers जो कि use करते हैं अपने designing के लिए programmers अपनी information को एक proper platform देने के लिए use किए जाते हैं. These are the certain EPI similarity search tools हैं, ये आपके तो freely available हैं, जिससे कि आप भी काम agricultural biologists are using a lot of all kind of blast versions are being used for TIGR for, so these are the certain, yes. These are the common tools, है ना, you can, but here this is the agriculturally important tools. Glimmer R, राइस जीन फाइंडर. तो जैसे पहले एक जनरलाइज बनाया गया, फिर एग्रीकल्चरल वालों के लिए थोड़ा सा अलग किया, एनवायरमेंटल साइंस वालों के लिए अलग बनाए टूल्स. तो आई ट्राई टू क्लब द टूल्स हियर विच आर मोस्टली यूज्ड by agricultural biologists or agricultural agroinformaticians, like MU6 box. So this is all names are given here in the slide, and these are the description of this tool, that which tool can give which kind of, because agroinformatics data agricultural का concept हमारे bioinformatics की, tools हमारे bioinformatics की, tools databases हमारे bioinformatics की, and both are mixed with each other, and the blend of both give the term agroinformatics. So these are the application of agroinformatics. Now coming to the main core part, that why we are dealing, हम क्यों कर रहे हैं, कोई भी चीज हम ड्रग बना रहे हैं, पेस्टिसाइड बना रहे हैं, नई वैरायटी बना रहे हैं, अगर आप देखो कितनी नई 24 घंटे 12 महीने हर वैरायटी हमको अवेलेबल है ना. दैट वाज द टाइम कि हम वेट करते थे अब गोभी आएगा तो गोभी की सब्जी बनेगी, बट अभी तो ऐसा नहीं है. एग्रीकल्चर में आप एवरी टाइम, एंड एग्रीकल्चर आल्सो इन्वॉल्व्स योर फिश सेक्टर. तो application of agroinformatics are involved in crops improvement, agriculturally important microorganisms. The people are working in the area of metagenomics, how the microorganism, how the biota of soil is impacting on plant, is impact. So another branch, metagenomics, evolved. सॉइल पे हमारे माइक्रोब्स भी हैं, ये माइक्रोब्स कैसे प्लांट के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं, राइजोबियम तो हम सभी पढ़ते हैं, बचपन से पढ़ते आते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन. So now how many other metagenomes are found, and in your NBRI many of the soil scientists, Dr. Forgetting the name, Preeti, he's working in the area of metagenomics of soil with the plant in NBRI. Dr. Forgetting the name. So, but anyhow, so you can develop the insect resistant variety, you can find out the conserved and synthetic syntenic regions of that, means the evolutionary relationship can be established. You can find out the EST sequences, you can improve the nutritional quality of your product, nutritional quality of your
फलों की, सब्जियों की। आप खुद देखते हो कि कैसे कैसे, जैसे रावण का सपना था कि वो 2 सपने थे उसके, कि एक तो स्वर्ग में सीढ़ी लगाना, दूसरा आम में गुठली ना होना। तो अभी हम इतना तो नहीं पहुंच पाए कि गुठली ना हो, पर आपने अगर कुछ वैरायटी देखी होंगी आम की जिसमें गुठली का साइज बहुत पतला हो जाता है, वेरी वेरी पतला। मतलब तरबूजों में सीड लेस तो नहीं कह सकते, बट हाँ बहुत छोटे सीड्स हो गए हैं। पपाया आपने देखा होगा, सीडलेस पपाया आ गए हैं। सो फिर ऑल नॉट ओनली द सिंगल ब्रांच कि हम कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी ने काम कर दिया, या एग्रीकल्चर ने, बायोलॉजिस्ट ने काम कर दिया, या एग्रो इन्फॉर्मेटिशियंस ने काम कर दिया। सबका एक ज्वाइंट एफर्ट होता है किसी भी चीज को आउटकम के फॉर्म में लाने में, चाहे वो आपकी येलो कैप्सिकम हो, चाहे ब्रोकली हो, चाहे न्यूट्रिशनल इंग्रेडिएंट इनरिच्ड राइस हो। तो एवरी कोई भी सेक्टर में जब हमारा क्वालिटी इंप्रूव होती है, न्यूट्रिशनल वैरायटी इंप्रूव होती है, जैसे घर बनता है, घर एक आदमी से नहीं बनता है, इसी तरह से जो सोसाइटी चलती है, जो एग्रीकल्चर इम्पैक्ट आता है, भाई एग्रीकल्चर का इम्पैक्ट तो सबके ऊपर आता है। खाना सब खाते हैं, फल फल फूल सब्जी सब खाते हैं, किसी भी मोड में खाते हैं, पर सब खाते हैं। तो इट इज द सोशल इम्पैक्ट, एग्रीकल्चर का सोशल इम्पैक्ट है। तो अगर हमारा एग्रीकल्चरल सेक्टर एनरिच्ड नहीं होगा तो हमारा सोशल इम्पैक्ट अच्छा नहीं होगा, बीमारियां होंगी। तो लोगों, कहने का मतलब ये है कि एक जॉइंट एफर्ट से हम अपनी सोसाइटी के लिए भी बेटरमेंट करते हैं। इस जॉइंट एफर्ट में हमारी एग्रो इन्फॉर्मेटिक्स, हमारी एग्रो इन्फॉर्मेटिशियंस भी अपना एफर्ट रोल प्ले कर रहे हैं। घर बनाने में कारपेंटर का अपना रोल है, मिस्त्री का अपना रोल है, लेबर का अपना रोल है, इंटीरियर डेकोरेटर का अपना रोल है, फाइनेंसर का अपना रोल है, तब एक घर बनता है सोशल। इसी तरह से दिस इज द एप्लीकेशन पार्ट, नॉट ओनली द एग्रो इन्फॉर्मेटिक्स कैन डू ओनली दिस पार्ट कि हमने भैया ढूंढ दिया, अब हमने ढूंढा, हमने ढूंढ के बताया, अगले ने उसको इम्प्लीमेंट किया, फिर अगले ने उसको कमर्शलाइज किया, फिर वो चीज आपकी मार्केट में आई, बिजनेस में आई। तो इट इज अ काइंड ऑफ चेन, इन काइंड ऑफ चेन एग्रो इन्फॉर्मेटिक्स इज ऑन द फर्स्ट इन द करेंट टाइम, क्योंकि किसी भी चीज को ढूंढना, पता लगाना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना। ग्रो इन द पुअर एंड सॉइल, ड्रॉट रेजिस्टेंट वेराइटी, कैसे हमने नए जीन्स ढूंढे कि जो ड्रॉट रेजिस्टेंट हो सकते हैं, स्ट्रेस टॉलरेंस कर सकते हैं, सॉल्ट रेजिस्टेंट हो सकते हैं। फिर रेशनल प्लांट इंप्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं, प्लांट ब्रीडर्स होते हैं, इन प्लांट ब्रीडिंग में हम कैसे। तो इन ऑल सेक्टर दिस इज द ब्रांच विच इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग, क्योंकि ढूंढना तो हर जगह का एक सबसे प्राइमरी काम है, और उसको प्रिडिक्ट कर देना कि ये ऐसा हो सकता है। तो एग्रो इन्फॉर्मेटिक्स is helping in all the sectors of these related to the. So this is the same thing I have written in the crop, how the comparative genetics can work. In the insect resistant variety, I have narrated some example, how you can improve the nutritional quality, because I'm running with the time. So these are the application of agroinformatics, how the new things are found, how the new varieties are found, how the new genes are implemented to improve the betterment towards the breeding, towards the new crops. So in rational plant improvement, of course, genomics is very important in giving the rational plant improvement. Grow in poorer soil, कम कैसी सॉइल है, इस सॉइल में किस तरह के पौधे उग रहे हैं, उनको कैसे हम न्यूट्रिशनल वैल्यू सप्लीमेंट कर सकते हैं, प्लांट ब्रीडिंग में किस तरह से हम एप्लीकेट कर सकते हैं। RFLPs are commonly used as a molecular probes to identify the conserved and non-conserved regions. So multiple NCBI, multiple species query page, if you go and identify the multiple species query page, search against all the available high throughput, जितने भी आपको रेजोल्यूशन जेनेटिक्स मैप हैं आपको मिल जाएंगे। एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का आपका अलग स्पेसिफिक डेटाबेसेस है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, तो इतना माइक्रोबियल इन्फॉर्मेटिक्स के ऊपर है। जब से मेटाजेनोमिक्स आ गया तब से तो बहुत इंफॉर्मेशन है, एंड इट इज वेरी गुड ब्रांच। मेटाजेनोमिक्स, systems biology, and high throughput data mining, NGS. These three are the very, very advanced and upcoming field of future. तो आप ऐसा नहीं है कि आप किसान होने का मतलब ये नहीं है, आप नई
टेक्निक से, नई चीजों से आप अपने आप को एनरिच करके यू कैन वर्क इन द एरिया ऑफ agricultural biology or agricultural informatics. So these are the certain future perspectives in which you can think and you can work. You can access the genomic information by these databases, by these maps, by these information resources. You can identify novel drug. Drug does not imply only human drug. Plant भी बीमार होते हैं, उनमें भी फंगल इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, माइक्रोबियल इन्फेक्शन होता है. तो अभी मैंने एक मुरैया कोनेगाइक के लिए एक, अभी आप देखते होंगे आजकल बहुत हर्बल पेस्टिसाइड्स का जमाना चल रहा है. तो जैसे लोगों ने क्या किया, मैंने एक निम्बोलाइट, एक एक्सट्रैक्ट है, निम्बोलाइट इसका नीम का एक्सट्रैक्ट है हर्बल, तो अवेलेबल है एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी. अगर आपने 50, 100, 200 आपने अपने हेल्दी फाइटोकेमिकल्स जो कि आपको एज ए एंटीवायरल हो सकते हैं, एंटी बैक्टीरियल हो सकते हैं, एंटी फंगल हो सकते हैं, अगर करके आपने उनकी लिस्टिंग करी और आपके प्लांट में आपको पता है कि आपके प्लांट में फॉर एग्जाम्पल कोलेडोट्राइकम फेलिकेटम जो हमारा गन्ने का बीमारी है, फंगस है, तो उस फंगस के एंटी फंगल अगर आपको ढूंढने हैं तो आपने नेचुरल एंटी फंगल की लिस्टिंग करी, नेचुरल एंटी फंगल कंपाउंड को आपने वर्चुअली स्क्रीन किया कंप्यूटर पे, आपने स्क्रीन करके आपने लिपिंस्कीज रूल में बता दिया कि 5 हमारे अच्छे एंटी फंगल हैं. अब आपने इन एंटी फंगल लिगेंड्स को, एंटी फंगल जो केमिकल है, फाइटोकेमिकल है, इनको लेके आपने अपने जो भी फंगस है, जो फंगस का प्रोटीन इंपॉर्टेंट है जेनेसिस में, प्रॉब्लमैटिक है, डिजीज कॉजिंग है, उस प्रोटीन को एज ए टारगेट बनाया और उसके साथ में अपने एक एक एंटी फंगल कंपाउंड को आपने डॉक कराया. दिस इज द डॉकिंग. तो जो आपको बेस्ट कंपाउंड मिला डॉकिंग करने के बाद ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन पैरामीटर्स लाइक बाइंडिंग एनर्जी, RMSD वैल्यूज, जो आपको बेस्ट मिला, आपने कहा कि इसको हम क्यों ना एज ए एंटी फंगल यूज करें, नेचुरल एंटी फंगल हम यूज करें, फाइटोकेमिकल है हमारा, उसको फिर आपने अपने लैब में 50 कंपाउंड में से आपने एक कंपाउंड को स्क्रीन आउट कर लिया, फिर आपने उस कंपाउंड को लैब में वैलिडेट किया. वैलिडेशन आप चाहे सेल कल्चर पे करो, सेल कल्चर पे करने के बाद फिर आप उसको इन विवो सिस्टम पे करो, फिर आप उसको कमर्शियलाइज करो. तो इस तरह से अभी एक जिस बच्ची को आज मेरी डिग्री मिलेगी PhD की, रूबी सिंह, शी वर्क विद ICAR सिफी Bombay and with me in, so she was working in the area of fish also comes under the agricultural biology, agriculture sector है fish. तो एक फिश है बीटा नोडा वायरस है जो कि मुरैया वो सॉरी जो कि बारामुंडी फिश है, उसको बहुत ज्यादा हार्म करता है. बारामुंडी इज अ वेरी डिलिशियस एंड हेल्दी मतलब फिश है, जो लोग फिश ईटर्स हैं. आई एम वेजिटेरियन, आई डोंट ईट. तो लिटरेचर में अवेलेबल है कि बारामुंडी, और बारामुंडी का मैक्सिमम इन्फेक्शन जो होता है वो उससे होता है, बीटा नोडा वायरस से होता है. तो वी डिड अ कॉन्सेप्ट कि व्हाई वी कांट स्क्रीन आउट द सर्टेन एंटीवायरल कंपाउंड विच आर नेचुरल, कि अगर हम उसको अपने कल्चर में डाल भी दें तो वो नुकसान ना करे. अगर आप कोई केमिकल डालेंगे, कुछ ज्यादा ड्रग डालेंगे जो कि एंटी वायरल होगी, तो दैट कैन इफेक्ट. तो हमने उसको 150 करीब 200 स्क्रीन कराया कंपाउंड, फिर करते करते बिकॉज हर PhD वर्क, सो लास्ट में एक कंपाउंड हमको जो मिला दैट वाज द कैम्फीन. कैम्फीन वाज द एक्सट्रैक्ट, एक तरह से प्लांट का ही है, और जो इस समय कपूर में भी कैम्फीन होता है. तो कपूर भी हम सूंघते हैं, जब हमको वायरल इन्फेक्शन होता है तो कपूर का इनहेल किया जाता है, तो आई जस्ट कोरिलेटेड. तो कैम्फीन वाज द, फिर उस कैम्फीन को मंगवा के मार्केट से हमने उसको सिफी, बिकॉज आई डिड द स्क्रीनिंग पार्ट, but I am handicapped because I don't have a fish culture facility with me, or I am bioinformatician. मैंने बोला ना कोई भी काम अकेला एक आदमी नहीं करता है. Then after the screening, I sent this part to SIFI. Dr. Prasad, Dr. Prani Prasad, principal scientist, he consented. तो उन्होंने उस कंपाउंड को, फाइटोकेमिकल था, उसका एक सिग्मा से मंगाया हमने प्योरीफाइड फॉर्म में, और उसका टेस्टिंग किया. तो वाकई में उसने बीटा नोडा वायरस की ग्रोथ को कम किया इन कंपैरिजन टू जो चीजें दी जा रही हैं.
तो अभी हमने उनको ये चीज इतना करने के बाद इन विट्रो वैलिडेशंस हो गए हमारे, एंड द रिजल्ट्स वर MTTSA वैसे जो भी चीजें करके इट इज अप टू द linearity. All results are in the linearity with the bioinformatics predictions. So now this product can be given for the in vivo culture, नॉर्मल फिश कल्चर में. अब डोजेस ऑप्टिमाइज करने के बाद कितना फिश के बॉडी वेट के हिसाब से इस कैम्फीन को हम नेचुरल पॉन्ड में डाल सकते हैं, या आप अपने कल्चर में जहां भी यूज होता है उसको एज ए प्रोफाइलेक्टिक मेजर्स में हम यूज कर सकते हैं. सो दिस इज अ काइंड ऑफ प्रोटोकॉल, डिपेंड्स ऑन योर नोवेलिटी, यू कैन अप्लाई. सो ड्रग डज नॉट इम्प्लाइज ओनली द मेडिसिन. ओके, ड्रग का मतलब खाली अपने कंटेक्स्ट में नहीं है. Then agri computational model system, you can develop the different model system. हमने आपको बताया novel Rhabdiosis thaliana is one of the very good model. Engineering of species exhibiting specific traits to discover causes and predictions. Yes, you can exhibit specific trait कि ये trait हमारा अगर होगा तो हो सकता है इसका prediction अच्छा हो सकता है. प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन हम कर सकते हैं. हमने आपको जैसे बताया कि आप प्रोफाइलेक्टिक मेजर्स दे सकते हो. अगर आपने हर्बल चीजें ढूंढी तो आप हर्बल को प्रोफाइलेक्टिक में यूज कर सकते हो रादर देन अ थेरेपेटिक अप्रोच. प्रोफाइलेक्टिक प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर. You know, your plant can be exposed towards any kind of bacterial infection. So better you give the spray that is herbal in nature, and that is antibacterial also. So it plant will also save, and it will not impact any negative intervention on your development of the plant. So these kind of prophylactic approaches can be found out with the help of docking. Docking is one of the very important protocol of bioinformatics. You can improve food production, environmental preservation, ecoinformatics. New discoveries of herbicide that I have already discussed, resistant crop, you can establishment of genetically engineered crop and livestock with enhanced nutritional values. In all areas, scientists are working, but still there is a need of future prospects in future perspectives in the area of. So this is the setting with the fish databases. These are the certain studies of fish, as fish is also under the, and so this is my group of students, and she is the Ruby. She worked with the Beta virus and agricultural, and both of them, Ilyas and Suyesh and Manohan, they are working in NBFGR and agricultural bioinformatics. So I think you are clear with the application part of, actually in the last I have included one slide, because fish also come under the agricultural business or agroinformatics. So there are the certain fish databases also I have included, just to make you clear कि not only in the area of plant as a agriculture, in the fish area, fish base, fish wise, fish stocking, we have also developed one HRE finder tool, my student Ilyas, and it is being used for the hypoxia resistive identification of hypoxia resistive genes in fishes. So in agri informatics is also serving in aqua informatics. Okay, because agriculture, fish is agricultural. Everybody knows this thing. So these are the certain related. And so I think I am with time, Dr. Lavkush. And thank you once again to the organizers and to all my dear student audience